Hello everyone. In this lecture, we'll see how to find the trigonometric ratio for theta 0 degree and for theta 90 degree. Okay, आसान है. पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हम थीटा 0 डिग्री के लिए ड्रॉ करते हैं एंड देन साइमल्टेनियसली विल ड्रॉ फॉर थीटा 90 डिग्री. देखिए, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस. So this is A, this is B and this is C. Okay, A, B and C. Similarly यहाँ पे भी ड्रॉ करो. This is A, this is B, this is right angled at B, this is also right angled at B. Okay, now let us see one by one, एक एक करके देखते हैं. Otherwise you will get confused. Confusion नहीं होना चाहिए. तो पहले हम 0 डिग्री के लिए देखते हैं और बाद में we'll see for 90 डिग्री. ठीक है, ये थीटा एंगल है. मैंने पहले अज्यूम किया कि थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू है. आई मीन टू से कि स्टार्टिंग में थीटा 0 नहीं है, थीटा है सम फाइनाइट वैल्यू, एंड देन आई अज्यूम दैट थीटा अप्रोचेस टू 0 ग्रेजुअली. जो थीटा है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 0 के तरफ जा रहा है. तो ये जो पॉइंट है सी, ये जो पॉइंट सी है ना, ये इधर आएगा. ठीक है, तो मुझे ये ए सी इधर मिलेगा, है ना. फिर ये इधर आएगा, फिर मुझे ए सी इधर मिलेगा, देन ये इधर आएगा, फिर मुझे ए सी इधर मिलेगा, देन इधर आएगा, इधर मिलेगा. फाइनली व्हाट विल हैपन, ये जो सी है दैट विल कवर बी. सी जो है वो बी के ऊपर आ जाएगा, सी विल कवर बी लाइक दिस. ठीक है, तो जब ये केस होगा, व्हेन दिस सी विल कवर दिस बी, देन थीटा विल बिकम 0 डिग्री. Okay, in this case what you can write कि AC will become equal to how much? AC will become equal to AB. AC will cover this, AC will become equal to AB and BC will become 0. जो BC है मेरा, ये जो डिस्टेंस है BC, that will become 0. ठीक है, अच्छा. तो इस फिगर से अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, आप देख कर लिख लो. साइन थीटा होता है मेरा P अपॉन H. सो दिस इज माय P, दिस इज माय H, सो इट इज BC अपॉन AC, BC अपॉन SC, एंड cos थीटा इज B अपॉन H, दैट इज AB अपॉन AC, AB अपॉन AC. नाउ we already have written the values over here. इसको आप फॉलो करो. So sin 0 BC upon AC, that is BC upon AC, and BC is 0, 0 upon AC is 0. So what you can write? Sin 0 is 0. Now let us see cos 0. Cos 0 क्या है? AB upon AC. AB upon AC. We have written over here AB is equal to AC. So this is the ratio of same quantity, so it will be 1. This is 0 for 0 degree. Sin 0 degree here is 0 and sin cos 0 degree is 1. So sin 0 degree is 0 and cos 0 degree is 1, right? See, ये हो गया. अच्छा, tan 0 क्या होता है? What is tan 0? It is sin 0 degree upon cos 0 degree. So it is nothing but 0 upon 1 will be 0. ठीक है, you got this. Sin 0 is 0, cos 0 is 1 and tan 0 is 0 upon 1, है ना. 0 divided by any number is 0. Okay, now see, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए cosec 0. तो cosec 0 क्या होगा? It is 1 upon 0. If I am dividing any number by 0, it is not defined. So this is going to be how much? Not defined. Sec 0
will be 1, reciprocal of 1 is 1, and then we have cot 0. What is cot 0? It is nothing but again 1 upon 0. This is not defined. ठीक है, ये लॉजिक है. इस तरीके से हम theta for 0, we can find trigonometric ratios for theta 0 for all the trigonometric ratios like sin theta, sin 0, cos 0, whatever जो है यहाँ पर मैंने बताया आपको इजी है. Now let us move on to theta 90 degree. See, so in this case we need to shift this point A over B. ये theta है, this angle is theta. We need to make theta 90 degree. So if theta approaches to 90 degree, then point A approaches to B. Point A will approach B, and this will happen. What I can write? BC will become equal to AC. This BC will become equal to AC because this point A has now covered this point B. And what I can write? AB will become 0. This length will vanish. It will become nearly equal to 0, or you can say it will become 0 itself. ठीक है, ये 0 हो जाएगा. Okay. Now after having this, what I can write? Sin theta P upon H, cos theta B upon H, sin theta BC upon AC, and cos theta AP upon AC from this figure itself. So if we have sin 90, then follow this. BC is equal to AC. I mean to say this ratio is of same quantities, right? So BC upon AC will be 1. So sin 90 will be 1. Similarly, cos 90 degree. See what I have written over here? AB is 0. So AB is 0, 0 upon AC. 0 divided by n number will be 0. So this is going to be 0. If sin 90 is 1, then cosec 90 is also 1. And if cos 90 is 0, then sec 90 is again what? Not defined. Understood? Now what about tan 90? What about tan 90? Tan 90 is itself the ratio of sin 90 and what? Cos 90. So sin 90 is 1, and cos 90 is 0. 1 divided by 0. Again this is not defined. And cot 90 is reciprocal of this. It is going to be 0 by 1. So this is 0. So in this way, for theta 90 degree, I have obtained all the trigonometric ratios. ठीक है, होपफुली आपको समझा होगा. यहाँ पे मैं पॉइंट की शिफ्टिंग कर रहा हूँ. पॉइंट की शिफ्टिंग करके मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक बार मेरा थीटा 0 हो रहा है, एक बार मेरा थीटा क्या हो रहा है? 90 हो रहा है. ये बहुत ही आसान है. वीडियो को आप एक दो बार देखो, आपको समझ जाएगा. तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं, मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, आप सबके लिए अच्छा लगता है मुझे वीडियो बनाना, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग. जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप बोलिए, मैं आपके लिए वो पोस्ट करूंगा. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.